Morning dear students, today we start our lesson 3, the other side of scientists. Good morning dear students, today we are going to start our lesson 3 of English literature book, and the name of the lesson is the other side of scientists. We start from page number 20, the human scientist. Sir Isaac Newton, the great English physicist and mathematician who discovered gravity, was once compiling the notes on all the research he had conducted over the course of 20 years. As usual, his dog Diamond slept nearby while he was busy at work. Newton worked all day, and when the sun went down, he lit a few candles and continued his work. Suddenly he heard a knock at the door, and he went to answer it after closing the door behind him. When Diamond heard strange voices, he woke up and panicked because he did not see his master around. He started barking in excitement and apparently collided against Newton's study table and upset the candle on the table. When Newton came into the room, he saw that all the notes he was working on were reduced to ashes. As Diamond came rushing towards him, he stroked the dog's head gently and said, "O Diamond, Diamond, thou little knowest the mischief thou hast done." जो सर आइजैक न्यूटन थे वो बहुत बड़े फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के साइंटिस्ट थे और उन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर किया था. सो व्हाट इज़ ग्रेविटी? वो नेचुरल फोर्स होती है अर्थ के अंदर जिसकी वजह से सारी चीज़ें ऊपर से नीचे की ओर गिरती हैं. पर सर आइजैक न्यूटन अपना काम कर रहे थे और उनका डॉग उनके पास सो रहा था और पूरा दिन ऐसे ही काम करते हुए बीत गया. और इवनिंग में उन्होंने जब अंधेरा हो गया तो उन्होंने कैंडल्स जलाकर अपने टेबल पर रखे. और उस वक्त जब गेट पर उनके नॉक हुआ और वो देखने चले गए तो उसी बीच उनका डॉग जो वहाँ सो रहा था वो स्ट्रेंज आवाज़ें सुनकर उठ गया और उसकी गलती की वजह से वो कैंडल सर आइजैक न्यूटन के स्टडी टेबल पे गिर गया और सारे पेपर्स जो थे उनके वो जल गए. बट सर आइजैक न्यूटन ने अपने डॉग को मारा नहीं, उसे कुछ डांटा नहीं, बल्कि उसे कहा, ओ डायमंड, डायमंड, डायमंड वॉज द नेम ऑफ द डॉग, कि तुम्हें थोड़ा ही मालूम है, मतलब कि बिल्कुल नहीं मालूम कि क्या बड़ी गलती तुमने कर दी है. उन्होंने क्यों नहीं डांटा अपने डॉग को? क्योंकि डॉग को नहीं मालूम था कि क्या मिस्टेक उससे हुई है. Thoughts at breakfast. Sir Alexander Fleming, who discovered penicillin, was once forced into an interview in New York by two journalists. Just as he was about to have breakfast, one of them asked him, "Sir, what are you thinking about right now? We wish to know what a great scientist thinks while getting ready for breakfast." Fleming mused a while on the question and he replied, "I am thinking of something very special." The journalists, who were all ears, drew themselves forward. "I am thinking whether to have one egg or two." So now we study about Alexander Fleming, who discovered penicillin, which is a vaccination for smallpox. और वो जर्नलिस्ट्स के साथ मीटिंग पर थे और उन्होंने उन्हें ब्रेकफास्ट पे बुलाया था. और जब वो ब्रेकफास्ट बिल्कुल करने ही वाले थे तो साइंटिस्ट से जर्नलिस्ट ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि अभी आप क्या सोच रहे हैं. हम सब ये जानना चाहते हैं कि एक साइंटिस्ट जब ब्रेकफास्ट करने वाला होता है तो वो क्या सोच रहा होता है. उनका क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे एक साइंटिस्ट जो होता है वो हर वक्त कुछ ना कुछ सीरियस थॉट्स ही सोच रहा होता है. तो कुछ देर तो चुप रहे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. फिर उन्होंने कहा कि मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सोच रहा हूँ. तो सबको लगा कि बहुत कोई सीरियस बात होगी, तो उन्होंने बिल्कुल मजाक करते हुए कहा कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे एक एग खाना चाहिए ब्रेकफास्ट में या दो. told you earlier that this lesson is about showing you the other side of the scientist. साइंटिस्ट का एक ह्यूमरस साइड, फनी साइड भी होता है, हमेशा वो सीरियस नहीं होते हैं. The boy genius. A mathematics teacher teaching in the 8th standard in a small school in South India was telling the class that any number when divided by the same number becomes unity, that is 1. A thin dark-eyed boy, Srinivas, asked, "Sir, is that true of 0 too?" The master was left speechless. The boy was the Indian mathematical genius Srinivasa Ramanujan. Srinivasa Ramanujan was a great Indian mathematician from South India. एक बार जब वो स्कूल में 8th स्टैंडर्ड में थे तो टीचर ने समझाया जब भी आप किसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर यूनिटी आएगा, मीन्स कि 1 आएगा.
तो उस बच्चे ने पूछा कि ए क्या ज़ीरो के केस में भी सेम है, अगर हम ज़ीरो को ज़ीरो से डिवाइड करें तो भी क्या आंसर 1 आएगा। और टीचर बिल्कुल स्पीचलेस हो गए, उनके पास जवाब नहीं था, क्योंकि तब तक ये डिस्कवर नहीं हुआ था कि आप जब ज़ीरो को ज़ीरो से डिवाइड करते हो तो आंसर यूनिटी नहीं आता है। This way this lesson is over, and next is new words that we have to study. Sense of humor means the ability to know when something is funny and to laugh at funny situations. कोई हंसने वाली बात, आपके अंदर हंसाना आना या किसी बात पे हंसना आना, that is your sense of humor. Anecdotes means short entertaining stories about real people. Theorems means rules or laws in science or mathematics. Naturalist is a person who studies or observes nature. Humbug, something false or nonsensical. Gravity means the natural force of attraction applied by a heavenly body that causes objects to move towards its center. कोई ऐसी फोर्स जो कि नेचुरल फोर्स जो चीज़ को अपनी सेंटर की ओर खींचती है, जैसे अर्थ किसी भी चीज़ को अपने सेंटर की ओर पुल करता है, इसलिए सारी चीज़ें ऊपर से नीचे गिरती हैं. दाओ, दिस वर्ड इज़ यूज्ड मेनी टाइम्स. दिस THOU दाओ मीन्स यू. म्यूज्ड मीन्स थॉट इन साइलेंस, किसी चीज़ के बारे में चुप होकर सोचना, दैट इज़ कॉल्ड म्यूज्ड.